Hello, everybody. Welcome to Cricket News with two unemployed men. I would say fans, but it's a high and low thing that we're going off of. I am Hassam Hayat, and joining me, as always, is Mustafa Butt. But he are आज खुश हूं मैं। आज टीम जीती है हमारी। ग्रेट परफॉर्मेंस में पाकिस्तान। बड़ी देर बाद ऐसी कोई क्लिनिकल किस्म की परफॉर्मेंस आई है विद द बैट विद द बॉल। हमारा जितना द वे आवर टॉप ऑर्डर प्लेड इट वाज ग्रेट। मास सदाकत pretty टैलेंट इन अभिषेक शर्मा में भी नहीं है। इट्स टू अर्ली टू से दैट। लेकिन आज बहुत अच्छा खेला बंदा। और it's बॉलर्स a, ने भी आज दे डिलीवर्ड। hmm. I would say that he is one लेकिन of ये है कि the future aspects that we can look forward to, among others like Saad Masood, Shamail Hussain, that we will get on to with his performance, as well as another youngster that I would like to highlight, a wrist spinner, Faisal Arkam, जिसने bus during that ODI series against South Africa and Sri Lanka, if many of you remember, he was spinning the ball and no one could understand कि कितना turn करेगा उसके ball, which was something refreshing to see and something that I'm looking forward to because spinners are basically the lifeline of the game nowadays. जब 100%। लेकिन वो बात है कि अभी इफ यू लुक एट अ टीम कॉम्पोजिशन, for some reason Mike Hessen he does not like to play in left arm spinners. You have Sufyan Mukim in the ranks, you have, as you said, Faisal Akram in the ranks, but for some reason that guy prefers to play Shadab Khan in the T20 format, and then in ODIs he doesn't even give a chance to uh, these bowlers, and he rather prefers to play with Mohammad Nawaz. So that's something that we have to look forward to. Like, before we get into the team potential team changes for the third ODI, I think it's better to start off with the performance that our team gave in the second ODI. ऊपर से start कर देते हैं. What are your thoughts on Masa Takat, the way he Ma batted? Ma Sadakat, if I had to just use one word or a phrase, I would say controlled. Up to the point he played that scoop shot. I know कि आप फ्लो में आ जाते हो that you would just get premeditated कि मैंने ये शॉट खेलना है इसके खिलाफ लेकिन sometimes you just need to pace yourself and say कि I'm not gonna go for this ball. It's gonna be it looks a little bit iffy. If I go for the shot, there's a 50-50 chance I might get out. So it's better if I not play it. And he was on song. Yeah, He मतलब उसका और दूसरे मैच के अंदर it was पक्का इसका maiden ODI century. Again, unfortunately, that scoop shot was the undoing of him. I mean, the way he batted, it seemed as if Sam Ayub जो करने की कोशिश करता है ना, in be it in T20s or be it in ODIs, मास सदाकत was doing that successfully. तो उसने जो स्कूप्स खेले हैं आज, स्पेशली अगेंस्ट द फास्ट बॉलर्स, लाइक वो बंदा बेसिकली सैम यूब ट्राइज टू हिट द नो लुक, उसका नहीं लगता, वो आउट हो जाता है। हम लाइक 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 या 8 टाइम्स आउट ऑफ 10 वो कैच हो जाता है। लेकिन मास सदाकत उसने कल 3 रैम्स अटेम्प्ट किए, 2 वर सक्सेसफुल। और वो ये लाइक वो नो लुक के स्टाइल में उसने मारा है वो। लेकिन वो बात यह है कि वो देख के मारते और प्रॉपर हिट मारते उसका मिडल होता है। उसने एक उसका चलो वो जिसके ऊपर आउट हुआ, प्रीमेडिटेटेड शॉट वट एवर, उससे विकेट गिर गया उसका। But yeah, overall great performance. Only his second game and scoring 70 odd runs. सेंचुरी कर सकता था if he had not played that shot, but full marks to him. बॉल के साथ भी डिलीवर किया माज ने, got 3 wickets. और जो Player of the दूसरा विकेट लिया match. था, that yeah, the ball that turned in, that was a beauty from him, an absolute peach. तो ये है कि फुल मार्क्स तो मार सदाकर। लेकिन our point of concern in the Pakistani batting is the middle order, क्योंकि आज भी पाकिस्तान का was a terrible collapse. Like, अगर मैं नंबर्स जल्दी से पुल अप कर लूं, क्योंकि I remember Pakistan had a great start, over 100 plus की पार्टनरशिप लगी थी between Sarada Farhan and मास सदाकत। ना दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट पॉइंट कि उसके अंदर फरहान का कितना कंट्रीब्यूशन था और मास का कितना कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि मास वाज एक्सेलरेटिंग व्हाइल फरहान वाज एंकरिंग। पाकिस्तान 103 फॉर नन, एंड उसके बाद विकेट्स गिरते गए एंड एट वन पॉइंट पाकिस्तान वर 5 फॉर 231, उसके बाद 6 फॉर 252, 7 फॉर 254। अब खुद देख लो कि you're 103 for no loss and you end up with 274 runs. That's what, like 160 odd runs and losing all 10 wickets. So that's quite concerning for Pakistan. Top order तो flourish कर रहा है, but there are concerns in the middle order. और उन players की भी बात करना जरूरी है जो कि perform नहीं कर पा रहे हैं, and one of those players is Shemail Hussain. Now, you talk about Shemail Hussain. I know I criticized him a bit, and I put into light the technique that he was going about in the last podcast. But the thing is, I do have to reiterate and highlight कि he's coming off of a high. उसका list A career, इसके first class के average जो है ना, it's around 40. This man can bat.
but he's having a little bit of a rough start right now. जिस बॉल पे वो आउट हुआ था, he was set up for that. जिस तरह पिछले they just tried to do the same thing that they did to him in the last match, and they were successful in doing that. It's not that this man cannot bat, he can, but right now it's a little bit of a rough start for him. अच्छा, आगे मेरे ख्याल में देर आर टू पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग शमाइल हुसैन. फर्स्ट थिंग एज यू सेड, कॉन्फिडेंस की बात है. कॉन्फिडेंस की बात क्या है? और इट्स जस्ट नर्व्स. इंटरनेशनल सर्किट में नया है, ही इज नॉट एबल टू सेटल इन एज ऑफ येट. द सेकंड थिंग दैट कुड बी इज के बांग्लादेश बॉलर्स ने आते ही उसकी वीकनेस पकड़ ली है. फास्ट बॉलर लगाओ, बोल हिम शॉट आउटसाइड ऑफ, हिल गो ऑन, हिल प्ले अक्रॉस द लाइन और वो टॉप एज पे विकेट देगा. फर्स्ट गेम एज वेल हमने ये देखा, नाहिद राणा ट्रैप्ड हिम अप लाइक दैट. उसको शॉर्टर वन दिया. उसने पहले भी एक शॉट मारा था, वो मिड ऑन के फील्डर ने उसका कैच ड्रॉप कर दिया फर्स्ट ओडिया में. उसके बाद वेरी नेक्स्ट ओवर ही गेव हिज विकेट अवे. आज फिर नाहिद राणा डिड द सेम थिंग, उसको शॉर्टर वन दिया, वो टॉप पे चलेगा, थर्ड मैन पे कैच आउट हो गया. सो इट्स आइदर ऑफ दोस टू थिंग्स. इट्स कॉन्फिडेंस की बात है या फिर आते ही भाई की वीकनेस पकड़ी गई है. होपफुली इट्स नॉट द लाइटर हाफ, क्योंकि वरना इट्स अ बिग प्रॉब्लम. एंड बाबर आजम ही इज वेटिंग इन द रैंक्स. आई मीन वो तो तैयार है अपना कमबैक करने के लिए ओडीआई इसके अंदर. उस कंपेयर कर चुके हैं ना, ड्यूरिंग द साउथ द श्रीलंका ओडीआई सीरीज सेंचुरी मार के उसने बना दी थी ना आई मीन दैट वाज अ वन ऑफ नॉक, बट वही बात है कि उसके बाद पाकिस्तान हैव नॉट प्लेड ओडीआई एज फार एज माय मेमोरी गोज. वन शायद ऑफ साउथ नॉक अफ्रीका तो नहीं अगेंस्ट था. खेले हों. इट वाज नॉट अ वन ऑफ नॉक, इट वाज अ मैच विनिंग नॉक माय फ्रेंड. बाबर आजम के जो शायकीन जो है ना, अभी कमेंट्स में आके कहेंगे. यार वो तो चलो, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिबेट. बाबर आजम, लेट्स नॉट गेट देयर, क्योंकि अभी स्क्वाड में है नहीं. जो प्लेयर स्क्वाड में है उनकी बात करते हैं. वन प्लेयर जिसके साथ आज काफी गलत हुआ है, सलमान अली आगा. दैट रन आउट, माय गॉड, वो क्या था? मतलब मेहदी हसन मिराज, कम ऑन डूड, कम ऑन. मतलब बंदा मुझे याद है, हाँ. रमजान में भी, हाँ. लाइक लाइक रमजान में वो लाइक तुम्हें लानते इमेजिन. हुए तो ये वापस जा रहे हैं. लाइक इमेजिन कि पाकिस्तान क्रिकेट, नहीं नहीं, ओके, first let's talk about this, then I want to point out something. First of all, I want to disregard this before I want to just say something that Salman Ali Agha, the way he was batting, it was impeccable. ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको जो है ना T20 वर्ल्ड कप से जो भी कैंपेन्स, he didn't have any emotional baggage regarding that tournament, and he's come off with this fresh mind, playing as his role defined in the ODI game. And he was, मतलब अगर बात करें ना, अगर नेक्स्ट टू मास सदाकत जिसका प्रॉस्पेक्ट था कि इस मैच में सेंचुरी मारेगा, इट वाज सलमान अली आगा. लेकिन लानते बेच के वो जो है निकल गया फिर ग्राउंड बाहर. वो आपने पता नहीं, मुझे एक मीम भेजा था, वो एंजेलो मैथ्यूज के कैप्शन लगा हुआ था, वो क्या हाँ हाँ था. हाँ. यार वो एंजेलो मैथ्यूज था और वो लिखा हुआ था कि यार एक मिनट में खोल ही लेता हूँ. लाइक वाज अ रियली फनी वन. मैं बहुत हंसा हूँ उसके ऊपर. अच्छा, लेट मी पुल इट अप. मुझे तो इन बंगालियों ने टाइम आउट की तक कर दिया था, और तुम्हें लगा था कि ये लोग सिंपल रन आउट नहीं करेंगे. आई मीन दैट्स ट्रू. मतलब वो बंदा वर्ल्ड कप के अंदर वो बंदा अपना हेलमेट भूल जाता है और उसको हेलमेट शाकिब भूल अल ही हसन जाता है. टाइम आउट कर देता है. ही डजंट फॉरगेट हिज टूटा हुआ हेलमेट. हेलमेट ब्रो, टूटा हुआ चलो हेलमेट था. टूटा हुआ हेलमेट ले आता है. यू प्रॉब्लली लेट इट स्लाइड. लेकिन वही बात है कि वो बंदे टाइम आउट नहीं छोड़ते. रन आउट की क्या बात है भाई, वो कर दिया रन आउट. ओके, बट लेट्स गेट टू सलमान अली याका's पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. वो चलो कहते हैं कि ही वाज गिविंग द बॉल, लेकिन इफ यू लुक एट फ्रॉम मेहदीज पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक टू एन एक्सटेंट ही डिड द राइट थिंग. अगर एक बंदा ही स्टैंडिंग आउट ऑफ हिज क्रीज, तो यू हैव कंप्लीट राइट टू रन हिम आउट. या इफ यू सी के व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मनकड़, अगर आपका नॉन स्ट्राइकर जो है वो बॉल होने से पहले क्रीज से बाहर चला जाता है, bowler has full right to run him out before the ball is being delivered. तो इधर I think it was a similar scenario, but the thing was कि वो सब हुआ था after the ball had been delivered. आगा for no reason was outside his crease. I don't think he should have been outside his crease, but he was, and I think Mahdi Hassan took full advantage of it and to an extent did the right thing. अब उसके बाद it was up to the captain if he wanted. Because we have often seen that if some bowlers attempt a man cut and he's successful, the fielding captain often says that it's okay, the batter can come back and he can bat. But some captains say that you're out, और वो कहते हैं कि आप जाओ वापस. So maybe the umpires could have asked the Bangladesh captain. अब मुझे पता नहीं है पूछा था कि नहीं पूछा था, लेकिन चलो अब तो हो गया. बट और यार, ओवरऑल गुड नॉक है ये भी बोल रहे सलमान कि आगा. कैप्टन ने ही तो रन आउट किया था, वो किधर से वापस लेता. क्या है? कैप्टन है उनका? हाँ, मिराज उनके कैप्टन है कहाँ है सीरीज के यार? लिए. लिटन लिटन दास नहीं है? लिटन दास नहीं है. वही नहीं, होल्ड ऑन. शायद शायद शायद. और डब्ल्यू कैप्टन वही है. मतलब आपका 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 कैप्टन
नहीं मतलब उस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, तो अब बाकी टीम से बंदा क्या एक्सपेक्टेशंस रखे? टाइम आउट, आई थिंक वो जो वर्ल्ड कप के अंदर वो हुआ था, वो शाकिब अल हसन है वो कैप्टन था उस शाकिब वक्त। शाकिब शाकिब भी कैप्टन था, और इस बार लाइक है कोई ऑफ स्पिनर कैप्टन का रोला है बांग्लादेश के दूसरे ऑपोजिशन बैटर्स के साथ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आई थिंक आगा डिड हिज रोल, और उस टाइम के अंदर काफी हद तक पाकिस्तान वर इन कंट्रोल। लेकिन यही है कि वो विकेट गिर गया, उसके बाद वो ये पे बैटिंग कोलैप्स ट्रिगर हो गया। फहीम अशरफ ही वाज नॉट गुड इनफ विद द बैट, और आपकी जो बाकी भी बैटिंग है, वसीम जूनियर, शाहीन अफरीदी, कितना ही रिजवान वाज स्लो मतलब बट उस टाइम। कितना ही एक्सपेक्ट करोगे। हाँ, टॉकिंग अबाउट रिजवान, मतलब इतना ही उसको गुस्सा चढ़ रहा था। ही प्लेड अ शॉट दैट वाज आउट ऑफ हिज प्लेइंग नेचर, और वो 100%। कैच आउट हो गया था इन सक्सेशन टू यार दी सलमान रिजवान विकेट। का आई फील ही वाज, जिस तरह हम देखते थे ना रिजवान का बैक इन हिज latter days of his T20 career, where he used to play catch up knocks. He'd come in, score 30 of 25 balls, and उसके बाद he'd accelerate and score like 60 of 45 balls. लेकिन वो ये कि some days it will pull off, or some days it would not. Majority of the days it would not. अब वो exact same चीज करना चाह रहा है with his ODI career. Like हम back in the day, like back in 2023 हम देखते थे, especially in the World Cup, Rizwan used to come in, he used to target the bowlers from ball number one. लेकिन अब since the Champions Trophy, I personally feel के Rizwan has slowed down earlier on in the innings, और उसके बाद he tries to catch up after playing like 30 to 40 balls, और आज he tried to do the same thing. Starting के अंदर Rizwan was quite slow, उसके बाद जब accelerate करने का टाइम आया, वो ये unnatural shot मारा Rizwan ने, he gave his wicket away। उस I टाइम would के say ऊपर जो that would wasted be, deliveries। to be honest, I think that was relative to the scenario that had occurred. One up here, I wouldn't think he would actually play that type of shot. Well, the commentators also point out that thing as well. I mean, that could be a fair argument, but if you look at Rizwan's strike rate at that time, वो 70s के अंदर था, तो there could be a Hmm. possibility कि Rizwan would have been like under the pump, और उसको लगा हो कि I need to get some boundaries here, otherwise काफी, क्योंकि एक टाइम पे पाकिस्तान में playing at like 7.5 8 and over जब मास सदाकत बैटिंग कर रहा था, और एक टाइम पे the run rate was barely 5, तो वहां पे वही है, वो जो रिजवान और आगा की एक बीच पे पार्टनरशिप लगी थी। आगा एक्सेलरेटेड वेल, आगा ऑल्सो स्टार्टेड स्लो बट ही एक्सेलरेटेड रियली वेल, बट रिजवान ही फेल टू डू सो। तो वो एक प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक रिजवान नीड्स टू फिक्स दिस, क्योंकि अभी अगर आप ऑनेस्टली इफ यू लुक एट द इंटायर पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट, आई डोंट थिंक रिजवान से बेहतर ओडीआई कीपर है अभी हमारे पास, बीट एज अ प्योर बैटर इवन, या फिर जस्ट एज अ विकेट कीपर। मोहम्मद रिजवान हैज टू प्ले पोजीशन, आप थोड़ी ऊपर नीचे कर सकते हो, बट रिजवान फॉर मी वुड बी पार्ट ऑफ द 2027 वर्ल्ड कप 11। और लेकिन एक प्लेयर है जो कि ही गॉट इंजर्ड टुडे एज वेल, बट ही वाज रियली पुअर विद द बैट टू, हुसैन तलत। इट्स बीन अ पुअर सीरीज फॉर हिम। पहला गेम भी अच्छा नहीं था, और आज भी विद द बैट ही रियली स्ट्रगल्ड, और सेकंड इनिंग्स में इंजरी भी होगी, शोल्डर इंजरी, लुक्स क्वाइट सीरियस, स्ट्रेचर्ड ऑफ अभी हॉस्पिटल में। तो होपफुली ही रिकवर्स वेल, बट उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करना जरूरी है, इट्स नॉट बीन अप टू द मार्क। It's unfortunate क्योंकि पिछले कई साल के अंदर he's been topping domestic, और उसको जो है ना एशिया कप में भी खिलाया गया था। He played that crucial knock against the श्रीलंका, जो आप कह सकते हो ग्रुप सेमी ग्रुप स्टेज के अंदर था, इन विच जो फाइनल के लिए हमने खेलना था। That was very crucial of a knock that he played, but his role as an anchor, it's really hard to look at him play right now. या बिकॉज आई रिमेम्बर अभी जो चैंपियंस कप हुआ था लाइक बैक इन नवंबर 2024 या दिसंबर, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम, उसके अंदर ही वाज रियली इंप्रेसिव विद द बैट, और बॉल के साथ ही ही वाज क्वाइट डिसेंट। तो आई वोंट से ही डिड नॉट डिजर्व टू मेक अ कमबैक इनटू द पाकिस्तान टीम, ही डिडंट डिजर्व टू मेक अ कमबैक, बट हैज ही made full use of his opportunity? He's not. And is it time to replace him? It is. क्योंकि he's first of all he's injured, and his performances ever since his comeback, I think एक performance आई थी against the West Indies, but that was a great performance. Him and Hassan Nawaz वो मैच दोनों ने सिंगल हैंडेडली जितवाया था पाकिस्तान को। बट ओके, अभी तो नहीं खेल रहे, ठीक है, हुसैन तलत इज आउट फ्रॉम द थर्ड ओडीआई। हु रिप्लेसेस हुसैन तलत? I think you bring back Abrar or you play Faisal Arkam so that he gets some sort of experience in the match. या फिर आप जो है ना साद मसूद को ही खिलवा दो। लेकिन it's a do or die match, so I highly doubt that they're gonna get Saad Masood, probably Abral for for that match. लेकिन अभी मीरपुर में ही हो रहा है ना, तो that's कायदा वेदर की वजह से it's gonna remain slow. तो yeah, I think most अच्छा, probably Abrar को माइक ही खिलाएंगे। माइक एसन के ऊपर जो क्रिटिसिज्म आता है लाइक काफी देर से आ रहा है, वो है कि ही डज नॉट प्ले स्पेशलिस्ट, ही ऑप्ट्स विद ऑलराउंडर्स। आज भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और ओनली गोइंग विद थ्री स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स, मोहम्मद हुसैन जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ। तो आई फील इफ यू हैव टू ड्रॉप हुसैन तलत, जो कि
confirmed now he won't play. So it's better कि आप you do not play Saad Masood, especially considering the conditions. Because if you win the toss, then it's well and good. You bowl first, you can make use of Saad Masood. Lekin if you get to bowl second, Mirpur is known for due in the second innings, lots of due. So I think he'll be completely ineffective in the second innings. आज भी Pakistan, I think the sole reason they did not play Abrar Ahmed was the risk of getting to bowl second, और उसके बाद he would have had difficulties to bowl. लेकिन आज he was not playing, and Fahim Ashraf, Shaheen Afridi, Wasim and Haris Rauf made full use and bowled incredibly. उसके बाद बारिश भी आ गई, और उसके आई थिंक बारिश हो गई तो अबरार अगर वो खेल भी रहे होते he wouldn't have been of much use. So I Yeah. think it will be better if Pakistan bring in Abrar Ahmed just to get a specialist spinner in, क्योंकि आज Pakistan did not have a specialist spinner. कौन था spinner? Salman Ali Agha was the your first choice spinner today. So I think Hussain Talet goes out, Abrar Ahmed comes in, or maybe Faisal Akram. Either one of the two. I don't see Saad Masood making the cut. Yeah, I don't see him But as if well. Like, but he if I isn't had to Saad pick, Masood an all-rounder? Isn't Saad Masood an I all-rounder, mean, bro? he exactly he is an all-rounder, but Pakistan do not need all-rounders at this stage. Only going with three specialist fast bowlers, only going with three My specialist bowlers, question, in fact. okay, well, my question is, do you replace an all-rounder with an all-rounder? And knowing Mike Hesson, he loves all-rounders, so I mean, like if you go with conventional wisdom, you do that. But considering Pakistan's current combination, suit nahi karega. You have to bring in a specialist bowler. all right. और आई थिंक कंसिडरिंग द circumstances it has to be फैसल अकरम that comes in, क्योंकि आपको भी पता है मुझे भी पता है बायलैटरल्स के अंदर रिजल्ट्स डोंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस. यू नीड टू टेस्ट योर प्लेयर्स आउट फॉर द बिग स्टेज. तैयार करना है इन लड़कों को फॉर द वर्ल्ड कप जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर है. अबरार अहमद, यू नो हिज क्वालिटी. अबरार को खिलाओगे लाइक 8 times out of 10 he'll perform, but I want to see how does फैसल अकरम do. स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस के अंदर डज ही डू वेल? बिकॉज पाकिस्तान के अंदर भी सॉ फैसल अकरम टर्न द बॉल माइल्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका. बट आई वांट टू सी आउटसाइड पाकिस्तान हाउ डज ही बोल, क्योंकि अगर तो अगले मैच के अंदर ही गेट्स अ चांस एंड ही गेट्स टू परफॉर्म, आई थिंक पाकिस्तान माइट हैव लॉक्ड इन देयर टू स्पिनर्स फॉर द वर्ल्ड कप. बिकॉज यू नो फैसल अकरम इज क्वालिटी, लेकिन वो ये कि लैक ऑफ चांसेस की वजह से हो सकता है कि टेस्ट करने का मौका ही नहीं मिले. एंड स्पेशली जब वर्ल्ड अभी तो हम वर्ल्ड कप से काफी दूर हैं, लाइक देयर इज अ ईयर एंड हाफ लेफ्ट इन द वर्ल्ड कप. लेकिन जब वर्ल्ड कप करीब आना शुरू हो जाएगा, ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के अंदर यूड ओनली गो विद वन स्पेशलिस्ट स्पिनर, बिकॉज मेनली सीमर फ्रेंडली कंडीशंस होंगी. सो इधर अबरार विल प्ले और फैसल अकरम विल प्ले. और जो उससे पहले बायलैटरल्स भी होंगे उनके अंदर अबरार वुड बी प्लेइंग. तो फैसल अकरम को यही टेस्ट करने का बेस्ट टाइम है ताकि आपका एक बैकअप रेडी रहे फॉर अबरार इन द वर्ल्ड कप, इन जस्ट इन केस अबरार की उस वर्ल्ड कप के अंदर फॉर्म चली जाती है. ऐसे ही है. एंड आई हैव टू मेक नोट ऑफ वसीम जूनियर, जो हम प्यार मोहब्बत में शैम्पू बुलाते हैं. शैम्पू, वो बाउंसर जो था ना, जो शुरू में उसने करवाया था वो सैफ हसन को, हम्म. दैट दैट रियली शुक हिम. एंड नजर भी आ रहा था he had difficulty after playing that. That was a really quick bouncer. Speedometer didn't show up. लेकिन जिस तरह से आ रहा था, it just looked like as if it's skidded on. Talking about his prospect overall, he can make the ball reverse in towards the end of the overs. And yeah, he can bowl the odd 140 plus as well. He has that यार capability. We've seen it. Mohammad Wasim Jr. has been like one of Pakistan's most underrated bowlers over the last 3 or 4 years. I remember he got selected in the World Cup squad for 2023. Starting in that he did not get any games. The first game Wasim played, I think it was the game against New Zealand, the 400 game, the Fakhr Zaman Yeah, that he 100 played game. that game. और उसके अंदर उसके अंदर I remember New Zealand were like 200 for 220 overs, और लग रहा था they're on par for 450 500. But then at the death Wasim Jr. comes in again, the reverse swing. He makes full use of the old ball, reverses the ball at New Zealand. At one point, they were on course for 500 quite comfortably. He restricts them to just 400 runs. और उसके बाद, Out of his even in 10 the overs, remaining games, out of his 10 yeah. overs, He three pulled, for let me 60, pull up the numbers. Yeah, three let for me pull up the 60. numbers real. एग्जैक्टली अब बाकी को कंपेयर करो और कंपेयर वसीम जूनियर. वसीम इज गोइंग एट 6 एन ओवर और टीम की ओवरऑल एवरेज इज 8 एन ओवर. सो दैट्स द क्वालिटी डिफरेंस दैट गाय कैन ब्रिंग फॉर यू. और उसके बाद इन दैट एंटायर वर्ल्ड कप वसीम जूनियर वाज योर बेस्ट बॉलर इन द रिमेनिंग गेम्स, बी इट द गेम अगेंस्ट बांग्लादेश और इंग्लैंड और whatever, he was great. और उसके बाद आई थॉट के द मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट चेंजेस तो बहुत हुए उस वर्ल्ड कप के बाद. वी हैव सीन न्यूमरस नंबर ऑफ कोचेस एंड सेलेक्टर्स एंड व्हाट नॉट. आई थॉट whoever would come in would show great faith in Wasim Jr. बट उसके बिल्कुल completely opposite हुआ. He got dropped from the team, playing 11 में चांस नहीं मिलता था. And then when Mike Hesson came in, I remember he gave a statement that Mohammad Wasim Jr., don't quote me on this, but I'm pretty sure Hesson said that Wasim Jr. is the best
death bowler Pakistan has in T20 internationals. That statement was given in May of 2024. And I remember ke until the South Africa series or the Sri Lanka try series, that guy did not get a single game. That's like 6 good months of your so-called best T20 death bowler not getting a single game. And then Wasim Jr. comes into the squad, performs incredibly well, does great for the next 4 months, and then two bad games. वो श्रीलंका वाली सीरीज के अंदर दो खराब गेम जाते हैं वो सीम जूनियर के 4 महीने के अंदर. यू ड्रॉप हिम फ्रॉम द वर्ल्ड कप स्क्वाड. और उसके बाद आपने जो डेथ पोलिंग करवाई है उस वर्ल्ड कप के अंदर आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर ने, वो इट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ अस. कितना स्ट्रगल किया पाकिस्तान ने डेथ के अंदर, बीट अगेंस्ट इंडिया and especially that game against Sri Lanka or England वाले मैच के अंदर भी, if we had a good death bowler who could reverse the ball, potentially we could have had a fighting chance. But obviously Wasim Junior was dropped because apparently he's not good enough. और लेकिन एट द सेम टाइम हमारा बेस्ट डेथ बॉलर भी है, तो आई डोंट नो कि मैनेजमेंट क्या चाहती है. माइक हैसन हैज मेड सम डॉजी कॉल्स थ्रू आउट हिज स्टेंट सो फार, लेकिन अभी तो ये है कि ही लुक्स गुड फॉर द 2027 वर्ल्ड कप. इज अ ग्रेट फील्डर एज वेल. आज जो कैच Gun पकड़ा, fielder. He's a पहली gun विकेट, fielder. पहली Jiddar, विकेट, पहली विकेट. wherever he was, चाहे जो मुश्किल भी catch हो, running on the field, he was there. He has a really good arm. He can bowl really good. This guy is the complete package. Play यार him. वसीम जूनियर, आई रिमेम्बर लाइक इन द ट्राई सीरीज, बंदे ही हैड अ रॉकेट आर्म. ठीक है, मेड सम ग्रेट रन आउट्स. और उसके बाद फील्डिंग में भी ही हैज बीन बीट द ग्राउंड फील्डिंग, बीट द कैचिंग, top notch. Wasim Junior is a complete package. Pakistan needs to. There are two players that is, in fact, three players that I say that Pakistan needs to fully invest in. One is Wasim Junior, one is Sufyan Wakim, the other one is Abbas Afridi. Abbas Afridi is Abbas nowhere in their Afridi. plans. Sufyan Yeah. Wakim is nowhere in their plans. One guy that is in their plans is Wasim Junior. Please make use of him, and please, 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 Abbas Afridi ko. I know he's not good enough for ODIs. ठीक है, उसका जिस तरह का playing style है, he won't make it to the ODI team. But in T20 internationals, Abbas Afridi could be one of the best players. Honestly, Pakistan could, आफ्टर लाइक, आई डोंट नो, अब्दुल रजाक के बाद अगर किसी को मैं देखता हूँ ना हैज अ ग्रेट पोटेंशियल टू बी अ रियल स्टार इन ओडीआई, स्पेशली एज अ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर फॉर पाकिस्तान इन T20Is, इट इज It's अब्बास what अफरीदी. is लेकिन yeah. लेकिन वही बात है, क्या मैनेजमेंट डज नॉट ट्रस्ट प्लेयर्स लाइक दोस डायनामिक प्लेयर्स हु गेट ऑन देयर डे टर्न द गेम ऑन इट्स हेड. वही हमारे मैनेजमेंट, दे लाइक कन्वेंशनल प्लेयर्स हु कम इन बैट विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 130, बोल विद एन इकोनॉमी ऑफ 8 8.5 एंड जस्ट गो एक्सपेरिमेंट करने का. they don't have the guts to do that, और वो we see it quite often कि it comes back to bite them. Yeah, that is one of the things that we hope that they improve upon, and we are looking forward for the clean sweep that we are hoping that will occur for this. हम हार चुके हैं एक मैच. I'm hard to get that's what I'm watching. No, oh yeah, I've said clean sweep. I meant winning the overall series. So that सीरीज ही जो is बड़ी बात है यार. I mean, with this squad, winning the series would be quite an achievement too, because Bangladesh, they're playing their full strength team. A young squad goes to Bangladesh, away conditions के अंदर, wins a series. That'll be a really good achievement. But after the series, I think there needs to be a discussion about Shaheen Shafri's captaincy spot. that is the thing that would be not best to be pointed out right now because if you remember what happened back in the before the 2024 World Cup, T20 World Cup, उसको T20 टाई का कैप्टन बना दिया एक सीरीज बुरा गया उसको हटा के बाबर को वापस लाया आई वुडंट थिंक that would be wise right now क्योंकि this is his second series as an ODI captain. I mean, sure, you could say कि Shaheen Shah Afridi, obviously, up इतनी जल्दी you won't want to make a captaincy change. But his performances, they've not been good enough. In the first game, he was absolutely horrible. आज if you look at those the wickets he got, एक अच्छी wicket थी Shaheen Shah Afridi की, the one that his second wicket, I think, the ball kept low, it swung in and he got a wicket. उसके अलावा it was पहला wicket, it was Wasim Junior's brilliance in the field. और उसके अलावा मुझे याद नहीं है शाहीन ने कोई wicket लिया या नहीं, but I think that there's Shahin's not the same bowler anymore, if I'll be very honest. Post injury, Shaheen Shah Afridi has been not the same. Hmm. I do agree with that. So I have nothing regarding whatever happened during the ODI, nothing more to put on. Do you have anything else? Yeah, I'll just ask you for your prediction for the third ODI. Are we winning this one? It's a 50-50 to be honest, because it is the monsoon season over there and over here. So it'll either get washed out or it'll happen. And if it goes on DRS, we're gonna lose, to be honest. I mean, we did have a rain delay in today's game as well. Like acha khasa, like after the third wicket went down, we had a like
3 आवर 2 आवर डिले, और मैं सो भी गया था उसके दौरान। लाइक वो डिले आया, मैं सो गया, फिर मैं 3 घंटे बाद उठा, और अब हम इसको रिकॉर्ड करें। और संडे वाले दिन भी देयर इज अ 45% चांस ऑफ रेन, तो potentially we could see some rain, लेकिन मैच हो जाएगा। और अगर मैच होता है, I think Pakistan are the favorites going into this one, especially after the performances they've given. So I'd go for a 2-1 Pakistan win. Oh, as Pakistan fans, we cope, we hope, and we always pray. कुदरत की निज़ाम भाई, 2022 का वर्ल्ड कप ने हमको किधर पहुंचा दिया। 21 वाला वर्ल्ड कप का हम उम्मीदें लगा के हम रख गए थे, लेकिन कुछ ना हुआ। हाँ, so with that, that is all from me. If there's anything else you want to say, Nah, that's all. thank you for tuning in with Cricket News with two unemployed pants, and hopefully everything goes out. Thank you for tuning in, and always check the pop increase before you bowl an extra. Goodbye. Bye.